Dear student, let us discuss the topic biomembrane from the chapter Cell, the Unit of Life. We know that there are two kinds of cell, eukaryotic cell and prokaryotic cell. Both these type of cell consist of cell membrane, but here we have written biomembranes. So what is biomembranes? Dear student, we know that in eukaryotic cell, it has both the cell membrane, the boundary, the delimiting layer of the cell, and also the membrane of the cell organelle. That's why we are going to discuss about biomembranes, both the cell membrane and the organellar membrane. Both the membranes are composed of same composition or structure, we can say that. What is biomembrane? The delimiting layer of the cell, or we can say the limiting layer of the cell organelle. Now we can discuss about the biomembrane, its biochemical investigation. Biochemically means it is composed of lipid, protein and carbohydrate. These are the biomolecules that are present in the cell membrane structure. The cell membrane can also be called plasma lemma and plasma membrane. So let us discuss about the concentration of lipid and protein, or we can say the ratio of lipid, protein and carbohydrate in the different types of cells, because we know that in eukaryotic cell there are different kind of cells in the different species. In human itself, it has liver cells, it has blood cells. Let us take an example of the blood cell here. Now the blood cell consists of 52% of protein, and you can see that it consists of 40% of lipid. That means it is particularly the composition of blood cells. Now we can know that the remaining percentage is of carbohydrate. But remember that different species have different ratio of lipid and protein, and basically the carbohydrate percentage varies from 1 to 2%. Now let us discuss the structural component of cell membrane of both eukaryotic and prokaryotic cell. We know that structurally both are composed of similar, that is lipid and protein. The lipid is a bilayer where the protein is scattered. Now we can discuss about this in a very good, latest and most well-known accepted model, that is fluid mosaic model. This model was given by Nicholson and Singer in the year 1972. The fluid mosaic model is the most accepted model and the latest model. It says that the lipid is phospholipid. It is a bilayer, two layers. It consists of two layers in which the proteins are in a mosaic pattern. We can see here an iceberg. The iceberg, let us consider the iceberg as protein, okay, and the sea water as phospholipid. We know that the iceberg are arranged in a mosaic pattern. It is asymmetric, it is not symmetric. So the arrangement is in a mosaic pattern. So that's why we can take another example also. In this case, we are taking gulab jamun. Now the gulab jamun is the protein, okay, and the sugar solution here is the phospholipid. We know that does the gulab jamun is arranged in a particular manner in the sugar syrup? No, it is in a mosaic pattern. So there is an analogous functional example that we have taken of iceberg and sea, and the second example as your gulab jamun and sugar solution. Now let us see the structure of the plasma membrane or the cell membrane, or we can say as plasma lemma. In this structure, you can see that there is a pink color head and there is a red color tail, that is lipid molecules. And these lipid molecules are arranged in two layers. The two layers, one is near the cytosolic, मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म की तरफ एक होता है, और दूसरा जो है the second layer is towards the outside of the cell, that is non-cytosolic. Here in the blue color you can see that the proteins are present in a
mosaic pattern. The blue color structure you can observe here, these are the proteins. So let us study the lipid bilayer. To study the lipid bilayer, we must know what is lipid. The lipid consists of two parts. The upper part, the spherical part, is called the polar head group, and the lower, the tail part consists of fatty acid chain. Okay, and we must remember that polar means hydrophilic, that is, it can interact with the fluid part. Now we know that inside the cell there is fluid part, that is cytoplasm, and outside the cell there is also a extracellular part. Okay, that's why the head group, the polar head group, should be towards the fluid part. Okay, because it can interact, it is hydrophilic, it can interact with water. Remember that it can interact with water because hydrophilic, the polar head group is hydrophilic and it is water loving. It can interact with the water. The second part, that is, you can see here the non-polar tail here. Okay, the non-polar tail consists of fatty acid chain, and this fatty acid chain consists of your hydrocarbon chain. Now this fatty acid has hydrocarbon chain which is not hydrophilic but hydrophobic, means water hating. That means the polar head group will be on the outer side of the cell and also inside of the cell, and in the interior there will be your hydrophobic part, that is the tail part of the lipid. So let us see here the polar head group. Okay, and we can see the non-polar tail is hydrophobic. Okay, and the polar head is hydrophilic. The hydrophilic, both the molecules are present, means the hydrophilic and the hydrophobic. That means it is an amphipathic molecule. Those molecules that have both hydrophilic and hydrophobic region. There we can see that there is an unsaturated fatty acid and there is a saturated fatty acid. The simple difference is that the saturated fatty acid, remember, that doesn't have double bond in it. The unsaturated fatty acid has double bond in it. Remember that the lipid maintains the fluidity because it is liquid. Now it can maintain because the unsaturated part maintains the fluidity. That's why unsaturated fatty acid is present in the lipid membrane. Now we can see that here the hydrophilic part is towards the aqueous medium. मतलब ये है कि water जहां पर होता है उसकी तरफ होता है क्योंकि water loving है. The second one here is non-polar, that is hydrophobic, which is away from the aqueous medium. मतलब इंटीरियर में प्रेजेंट है. द टेल पार्ट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द लिपिड बाइलेयर. नाउ स्टूडेंट्स, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आपने बाइलेयर लिया था. क्यों लिया था? क्यों एक सिंगल लिपिड लेयर cannot be a delimiting layer? Because we know that the lipid consists of hydrophilic and hydrophobic region. Now if we take the hydrophobic region, then it will be towards the aqueous medium. Now the aqueous medium doesn't interact with the hydrophobic because it runs away from the aqueous medium. That's why to have two polar regions towards the inside of the cell, towards the outside of the cell, the lipid is a bilayer. Clear है इसके बारे में? The next thing is that the lipid molecules here is maintaining the fluidity because it has unsaturated fatty acid, but the rigidity is also required. Why rigidity is also required? Because the plasma membrane is a semi-fluid structure. It is semi-fluid, in between solid and liquid, because it has to be stable. अगर liquid हो जाएगा तो फिर वो membrane का framework maintain नहीं कर सकता. Maintain करने के लिए framework को rigidity चाहिए, and that rigidity is provided by the molecules called cholesterol. You can see here it has a single tail. Okay, now this cholesterol molecule provides rigidity, stability to the membrane. The next thing we are going to discuss is about protein. What is protein? And protein is of two types. One is extrinsic protein, the other is intrinsic protein. Why do we require protein?
The extrinsic protein are required for the interaction between cell to cell. Okay, enzymatic activities occurs in the extrinsic protein. Now, why it is extrinsic? Because it is superficially attached to the polar head groups of the lipid bilayer. You can see here the extrinsic protein. Now, it can be easily removed from the surface. It is not tightly bound, but remember that there is also intrinsic protein here, intrinsic protein. You can see that the intrinsic protein is also called integral protein. That means it is integrated, it is buried in the membrane. Now, buried है, लेकिन दो तरीके हैं, एक तो partially buried है, एक completely buried है. Those are partially buried, okay, and some are completely buried. Now, the completely buried intrinsic protein are of two types. You can see here there are two types of completely buried. One is carrier protein and the other is tunnel protein. आप carrier protein देख रहे हैं, दूसरा जो देख रहे हैं tunnel protein. टनल में आप देख सकते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल को एक पैसेज है, एक कंटिन्यूअस पैसेज है. दिस इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ कैरियर प्रोटीन. सो रिमेंबर स्टूडेंट, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, और सुपरफिशियली बाउंड कौन होते हैं? आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. Now, you can see here it is glycolipid. What is glyco? But glyco means carbohydrate or oligosaccharide, we can say, that consists sugar, right? And sugar plus lipid means that carbohydrate is associated with the polar head group. लिपिड के साथ एसोसिएटेड है वो कार्बोहाइड्रेट, वो शुगर, इसलिए ग्लाइकोलिपिड कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोप्रोटीन. That means the protein part is associated with the carbohydrate. The glyco part is attached to the protein part. That's why it is glycoprotein. You can clearly see here the glycoprotein and the glycolipid, where it lies, towards the non-cytosolic half, not towards the cytosolic half. मतलब inside of the cell में ये प्रेजेंट नहीं है, टूवर्ड्स द साइटोजोलिक रीजन ये प्रेजेंट नहीं है. इट इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड ऑफ द सेल, ओके, बिकॉज इट हैज टू डू सेल टू सेल इंटरैक्शन. दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट. द नेक्स्ट डायग्राम हियर इज NCERT diagram. For the examination point of view, NCERT diagram comes. That's why remember the sugar part here. This is the sugar part. बीड्स, येलो कलर के बीड्स देख रहे हैं, अगर बीड्स में प्रेजेंट है तो फिर वो शुगर है. शुगर अटैच है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां पर जो है वो है प्रोटीन. आप देख सकते हैं, प्रोटीन देख सकते हैं. तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है. द इंटीग्रल प्रोटीन आप देख सकते हैं वो पूरा बरीड है, कंप्लीटली बरीड है, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड आप देख सकते हैं. और द नेक्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल. बट आप कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं. अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जब भी देखेंगे यहां पर फैटी एसिड के दो चेन आपको दिखाई देंगे लिपिड मॉलिक्यूल में, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में दो चेन नहीं दिखाई देंगे. इस तरह आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. क्लियर है? अब देखिए आपका लिपिड बिलेयर में अपर और लोअर लेयर दोनों लेयर हमने ले लिया है, ठीक है, और इसलिए इसे कहते हैं लिपिड बिलेयर. रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ओके. नाउ द फॉस्फोलिपिड, दिस इज द मेन कंपोनेंट because it forms the structural framework of the plasma membrane. Remember that. And this phospholipid provides fluidity. क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है. ये याद रखेंगे इसमें, because it is continuous structure frame of the cell membrane. एक continuous frame बना रहा है जिसमें मोजाइक के पैटर्न में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है. क्लियर है इसके बारे में? The next thing is that the phospholipid प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी. अब फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, पहले भी बात की है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वो लिक्विड है और उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है. इस वजह से फ्लूइडिटी भी मेंटेन होता है, ये याद रखेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज द कोलेस्ट्रॉल. ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये भी एक तरह के लिपिड होते हैं और या स्टेरॉल होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन प्लांट सेल. ये याद रखिएगा.
वहां पर फाइटोस्टेरॉल होते हैं, वहां पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। रिजिडिटी चाहिए हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक स्टेबल सेल मेम्ब्रेन चाहिए। पूरा लिक्विड हो गया तो बह जाएगा, हमें एक स्टेबल चाहिए, सेमी फ्लूइड नेचर चाहिए। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं? क्वाजी फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये सेमी फ्लूइड है, जेल लाइक है, इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, दैट्स व्हाई इट इज क्वाजी फ्लूइड। अब ये क्वाजी फ्लूइड का फ्लूइडिटी मेजर कैसे कर सकते हैं? फ्लूइडिटी इसका मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन द लिपिड बाइलर। ये याद रखेंगे। देखते हैं कैसे यहां पर प्रोटीन मूवमेंट हो रहा है। देखिए, इसको मेजर करके हम बता सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर में, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आपके प्लाज्मा लेमा में या फिर सेल मेम्ब्रेन में कितना फ्लूइडिटी है। इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप अगर बात कर रहे हैं फ्लूइडिटी का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि अगर फ्लूइडिटी हो तो सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन कर सकता है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, देयरफॉर फ्लूइडिटी इज रिक्वायर्ड। सेल टू सेल रेगुलेशन, इंटरैक्शन, अब यहां पर देख सकते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं, तो सेल टू सेल क्या कर सकते हैं? रिकॉग्निशन हो सकता है, सेल टू सेल क्या हो सकता है? इंटरैक्शन हो सकता है। याद रखेंगे। फिर सिक्रेशन के बारे में, सेल सिक्रेट करता है। आपको पता है कि सेल क्या कर सकता है? सिक्रेट कर सकता है वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस that is required by the other parts of the body. That's why we have to remember that cell can secrete, and this secretion is possible due to fluidity. The next is endocytosis. बल्क में भी सेल क्या करता है? सॉलिड या लिक्विड एनगल्फ करता है। तो एनगल्फ करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। सेल डिवीजन में जब एक पेरेंटल सेल से दो सेल बनते हैं, वहां पर भी ये फ्लूइडिटी नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन में। तो ये सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज आवर प्रोटीन। बेटा, प्रोटीन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है उस डायग्राम के साथ, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का जो कैटेगराइजेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बेसिस के ऊपर यहां पर देख सकते हैं आप। पेरिफेरल प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और ये सुपरफिशियली अटैच्ड है टू द सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। और यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा जो प्रोटीन है आपका है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इससे पहले इसका फंक्शन बता देते हैं। मैंने बताया था कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, किसमें होता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। अब दिस इज टाइटली बाउंड टू द मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, टाइटली बाउंड टू द मेम्ब्रेन है और पार्शियली बरीड हो सकता है या फिर कंप्लीटली बरीड हो सकता है, और ये डिफिकल्ट है। इसको जो एक्सट्रैक्ट करना, इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहां पर आप देख सकते हैं पार्शियली बरीड है, ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं पार्शियली बरीड है। ठीक है, और ये दोनों यहां पर जो प्रेजेंट है, ये दोनों जो प्रेजेंट है, ये कंप्लीटली बरीड है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब पार्शियली बरीड जो है ये भी है इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, और कंप्लीटली जो बरीड है ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, कंप्लीटली बरीड में हमने दो टाइप पढ़ा था, एक तो टनल प्रोटीन, दूसरा आपका कैरियर प्रोटीन। टनल प्रोटीन में एक कंप्लीट पैसेज होता है, whereas it is absent in case of your which प्रोटीन? कैरियर प्रोटीन। तो इसको हमने डिस्कशन कर लिया है प्रोटीन के बारे में। ठीक है, और यहां पर कैरियर प्रोटीन देख सकते हैं आप, यहां पर टनल प्रोटीन देख सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट वी कम टू कार्बोहाइड्रेट। बेटा, अगर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे लेकिन 20 के अंदर होंगे तो फिर कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? या फिर तो ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ एसोसिएटेड है तो फिर ग्लाइकोलिपिड होगा। एक चीज याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर प्रेजेंट
towards the non-cytosolic surface or towards the outside of the cell, not towards the inner side of the cell, या inside of the cell में जो membrane present है, जो cytosolic part है उसमें present नहीं होता है। ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरैक्शन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर हमने फर्टिलाइजेशन में लिया है। आपका जो स्पर्म होता है मेल गैमेट और एग होता है, ओवम होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो दोनों कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं ईच अदर को? ड्यू टू दिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। द सेकेंड वन इज ब्लड ग्रुप एंटीजन। आपको बेटा पता होगा जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी होते हैं और AB भी होते हैं और O ब्लड ग्रुप भी होता है। लेकिन बेटा ये याद रखना है, A ब्लड ग्रुप में एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, यहां पर हमने स्पेरिकल ले लिया है शुगर मॉलिक्यूल को। B में भी एक शुगर मॉलिक्यूल होता है बेटा, हमने देख लिया है, यहां पर स्क्वायर वाला हमने जो लिया है वो शुगर मॉलिक्यूल है B ब्लड ग्रुप के लिए। अगर लेकिन ब्लड ग्रुप आपका AB है तो दोनों शुगर प्रेजेंट होंगे। आप देख सकते हैं A शुगर प्रेजेंट है और B शुगर दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन बेटा आपको पता है कि जो O ब्लड ग्रुप होता है उनमें प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं वहां पर O ब्लड ग्रुप में हमने वो शुगर नहीं लिया है। तो ये है आपका एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ओलिगोसैकेराइड के बारे में। आपको पता है कि आपके मेम्ब्रेन में 3 चीजें हैं, लिपिड है, प्रोटीन है और क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस रिलेटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट आरबीसी मेम्ब्रेन कितना परसेंटेज में है? आपको पता है ये फिक्स्ड है, 52% है। द आंसर इज 52%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1972 फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, निकोलसन ने प्रपोज किया था और सिंगर दोनों ने मिलकर किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस के बारे में, डिस्कवर के बारे में हमने पढ़ा था, इसलिए इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यहां पर फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है? लिपिड। और फॉस्फोलिपिड क्या करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ये सही है। और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेस्ट्रॉल। तो हम सिलेक्ट करेंगे यहां पर फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, 2 तरीके के हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। सुपरफिशियली कौन अटैच्ड है? आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कंप्लीटली क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है, कौन? Intrinsic protein. That's why our answer here would be ease of extraction. So here the questions are over. Thank you.